In our previous discussion, we have already seen that how to compile the C source file and create it .i file, .s file, and then .o file, that is object file. Uh, and the content of this object file we have already seen. Today we will discuss actually what is the content of this object file, why it is called the relocatable object file, and also we'll discuss how to create the make file सो दैट हम लोग को क्या करना पड़े, बार बार एक कमेंट क्रिएट ना करना पड़े। एक जगह में हम लोग एक कमेंट राइट करके रख दे जो मेक फाइल बोलते हैं, और उससे जैसे मेक कमांड डालेंगे तो देन इट विल एग्जीक्यूट द व्हाट एवर कमांड यू हैव रिटन टू एग्जीक्यूट योर कोड्स एंड प्रोड्यूस द expected output file for your linking or generating the hex file. सो हम लोग आज देखेंगे कि कैसे कंपाइलर के नोटपैड के थ्रू हम लोग एक मेक फाइल बनाएंगे, उसका भी प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए, हम लोग के पास एक सी फाइल है जो मैंने इस फोल्डर में रखा है, .c फाइल, एंड मैं इससे .o फाइल बनाऊंगा। कैसे .o फाइल बनते हैं इसका थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर देखेंगे .o फाइल जो होता है वो एक्चुअली ELF फाइल होता है, एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फाइल होता है। तो उसको भी हम लोग, उसका डाटा जनरली ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, तो उसको हम लोग कैसे दूसरा तरीके से रीड कर सकते हैं वो भी हम लोग विल ट्राई टू लर्न इट ऑल्सो। सो हम नोटपैड में चलते हैं, इसमें जाके आपने एक फाइल बनाया और फिर सबसे पहले आप लिखेंगे कैपिटल C एक वेरिएबल बना रहा हूँ हम लोग, C इक्वल्स टू R नॉन EAVI हाइफन GCC। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया, आगे इस जो GCC वेरिएबल है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जब भी हम लोग जहाँ पे भी CC लिखेंगे दैट विल रिप्लेस दिस टेक्स्ट। ओके, तो एक वेरिएबल बना लिया जिसमें बार बार R नॉन EAVI लिखना ना पड़े। हम लोग सिंपल बेसिक से एक फाइल बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करके दिखाएंगे। Then next I have taken a next variable that is match, and I have write here the cortex M4. So जहाँ जहाँ पे whenever I use this match variable, then that will replace by cortex M4. Then the next variable is C flags. C flags equals to hyphen C, then MCPU equals to, आप यहाँ पे डॉलर साइन के बाद जब भी कोई वेरिएबल को आप यूज करेंगे देन यू हैव टू राइट लाइक दिस टू रिप्लेस द वेरिएबल कंटेंट। So you have to write the dollar, then first bracket, then write the variable name and close the bracket. So अब जैसे इसमें करेंगे तो इस पोजीशन में क्या आ जाएगा, M cortex M4, then M thumb, then I have write the std equal to GNU 11। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो GNU या टूल चेन का जो भी C स्टैंडर्ड है 11 स्टैंडर्ड का हिसाब से ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। देन मैंने लिखा ऑप्टिमाइजेशन लेवल, इफ यू वांट यू कैन गिव, अदरवाइज यू कैन स्किप आल्सो दिस। सो आई हैव रिटन द ऑप्टिमाइजेशन लेवल 0, तो नो ऑप्टिमाइजेशन। देन come to the next line and write the targeted output. What is your targeted output? So मैंने
एक सी सोर्स फाइल जो डिपेंडेंट फाइल है, डिपेंडेंट फाइल मेरा एक सी सोर्स फाइल है, जिस डिपेंडेंट फाइल से मैं टारगेट फाइल मेन डॉट ओ फाइल बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपका यू फर्स्ट राइट द टारगेटेड आउटपुट फाइल, then colon, then write the dependent file. What is my dependent file? Main.c. So put the name of this main.c file. So from the dependent file it will create the output file main.o. Then place the cursor here, uh, place the cursor here and give one tab and write, place one tab, then write uh, dollar sign and then cc, which will write the arm non avi, then the dollar sign and use the flag. So it will replace arm non gavi cc hyphen c mcpu cortex m4 m thumb standard equal to gnu optimization level 00, and then you have to put output file. What is output file you want to give? So you have already written the name of this output file and also the target file, so you can write again main.o, then main.c, or you can simply write like this. So dollar sign will replace dollar sign and at the rate, this at the rate replace the main.o, and then dollar sign and this arrow. So that will replace by main.c. Sorry. Okay. So dollar sign cc, then flag, then output file name, then input file, yeah, source file. Save it is, go to save as and write Makefile and click save as. Don't give the any file type. There should be no file type. We know that the Makefile has no file type, only it is if the dot text come after that, then go to the file and omit it. If after saving, if you see that अगर यहाँ पे डॉट txt आया हुआ है, then simply double click it, and if there is dot txt, then simply remove it till the dot. Okay, and keep only like this. Now open the command prompt terminal, then locate your file. My file is actually in D drive without ID test, the file name. If you see that, that is my file name. Then see the list of file is present or not, you can see here. Then you can see that there is a make file is present, that is. So now just write the make command and press enter.
then you will see that it will automatically uh, write this command, and if you go to your folder, then you can see that the main.o file has generated. Okay, so if you see that main.o file, your object file has been created, but you can read it. So now we will understand how to read the data also of main.o file. But let me talk that if you write the make command and your command is not working, then you simply go and type that make file download, and you can see the YouTube video. There are lots of video how to download the make executing folder. So from there you can download the file also. If your command not working, then you have to download the minji.w file. So let's see how to see the content of this object file. Simply write that armnon avi object dumped help dump h main.o. The h means that will show the content of this file. How many sections? There are 4 sections. That is on text sections. The size of this text section is in hex. Actually, it is 80 byte. Okay, the size of this section is 80 byte. And the data section has the 4 byte. There is no BSS section 00. That's why it is. And the compiler added these two, command and arm attribute, that is ended by compiler. Okay, this is our main data, and that is actually written by compiler. So now see the, if you want to see all the sections and the code also, then you can write .s and provide the object file, and you can redirect to the output to any particular file. So I have written that text log, then it will produce a file, and we can go and test it that yeah, text dot log file has been created. Then you can see that the content of this file, the text section is like this, and the data sections and the other 2 sections which is added by the compiler. So now, why object file is called the relocatable object file? .o file, why it is called elf file is relocatable object file? If you see that the address, this is basically the relative address, not the actual address. If you see the starting of this text section is 00, and also the starting of this data section also 00. So all the sections start with 00 and in a incremental order next data. So they are basically the 16 byte in a single line. This is 00 and this is 01. In this way it is arranging. But when you linking this file to the linker, then it will produce the target dependent file which
linking the actual address of this. Suppose the text section going into the flash location. The flash location generally start from 0x0860. Then there, this is the starting address, and this offset adding with this hex address, and the content of data sections also according to adjust in this target file. So that's why it is called the relocatable object file. मीन्स आप कहीं पर भी किसी भी फाइल के साथ आप इसको क्या कर सकते हैं, मार्ज कर सकते हैं. इसमें एक्चुअल एड्रेस नहीं रहता है, इसमें रिलेटिव एड्रेस रहता है. क्योंकि ये अगर ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब एक्चुअल फाइल बनता है तो ये जीरो फ्लैश या टेक्स्ट सेक्शन का हिसाब से जिस एड्रेस में जाना चाहिए उसका साथ ये मार्ज होता है, ये सेक्शन मार्ज हो जाता है. वैसे ही डाटा एंड अदर पार्ट जो भी रहता है कोड में, वो जहाँ पे भी मार्ज होना चाहिए उस एड्रेस के साथ लिंक होकर उसका एड्रेस से शुरू हो जाते हैं. सपोज दिस एड्रेस मान लेते हैं कि इसका एक रैम वेरिएबल में जाना चाहिए. ओके, तो रैम वेरिएबल मेरा यहाँ से शुरू होता है. ओके, सो ये क्या करेगा, जो भी किसी का स्टार्टिंग एड्रेस है ये उसका साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इस तरह से. तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस हो जाएगा ए एड्रेस. इस तरह से एक्चुअल में ये एक्चुअल एड्रेस बन जाता है. लेकिन बिफोर दैट इट्स द रिलेटिव एड्रेस. एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका साथ जुड़ते जाता है. जो ये बेसिकली द ऑफसेट है. ओके, सो I hope you have understand. Still, if you have any doubt, then you can comment me, and we will also improve our text file. That is, sorry, the Makefile, to make it more enrich content and compile reliable. Thank you.